Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to discuss lecture number 3, line spectra from fluorescent sources. Another convenient way of producing a line spectrum is to irradiate the element or one of its compounds with the continuum radiation from an X-ray tube. This process is explored further in a later section. इसमें ये होता है कि when the X-rays is applied to a element or a compound, its electrons are ejected. The inner electrons are ejected. When here the vacancy remains, that vacancy is then filled by another electron from the outer shell. When that electrons go to the vacancy, the radiation is emitted in the form of X-rays. इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में. स्पेक्ट्रा फ्रॉम रेडिएक्टिव सोर्सेज. रेडिएक्टिव सोर्सेज भी एक्स-रेज को जो है इजेक्ट करते हैं. X-rays radiation is often a product of radioactive decay processes. Gamma rays, which are indistinguishable from X-rays, are produced in intranuclear reaction. जब इंट्रान्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो एक्स-रेज अक्सर प्रोड्यूस होता है और गेमा रेज जो है दिस इज़ रिलेटेड विद या दिस इज़ नियरर टू द एक्स-रेज. पहले गामा रेज फिर उसके बाद एक्स-रेज होता है. Many alpha and beta emission processes leave a nucleus in an excited state. The nucleus then releases one or more quanta of gamma rays as it returns to its ground state. ये न्यूक्लियर रिएक्शन की बात कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉन कैप्चर और K capture also produces X-rays radiation. This process involves capture of a K electron, less commonly an L or M electron, by the nucleus and formation of an element of the next lower atomic number. इसमें जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेता है फ्रॉम द के शेल्स. मोस्टली चूँकि के शेल करीब होता है न्यूक्लियस के तो वो के शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है और वो एक दूसरी एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है. As a result of K capture, electronic transition to the vacated orbitals occur, and we observe the X-rays line spectrum of the newly formed element. The half-lives of K capture processes range from a few minutes to several thousand years. Artificially produced radioactive isotopes provide a very simple source of monoenergetic radiation from certain analytical applications. एक तो नेचुरली रेडिएक्टिव डिके होता है, दूसरा जो है आर्टिफिशियली. बेस्ट नाउन एग्जाम्पल इज आयरन 55 which undergo a K capture reaction with a half-life of 2.6 years. आप देख रहे हैं कि आयरन है when it is converted into the manganese तो हमारे पास इधर रेडिएशन इमिट होता है in the form of X-rays. आयरन मैंगनीज में कन्वर्ट हो जाता है. The resulting manganese K alpha line at about 2.1 angstrom has proved to be a useful source for both fluorescence and absorption methods.
यानी इसको फर्दर एब्जॉर्प्शन और फ्लोरेसेंस के लिए हम यूज़ करते हैं। टेबल 12.2 लिस्ट सम एडिशनल कॉमन रेडियो आइसोटोपिक सोर्सेज फॉर एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट है विच कैन बी यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एक्सरेज। तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। Absorption spectra. When a beam of X-rays is passed through a thin layer of matter, its intensity or power is generally diminished as a result of absorption and scattering. जब हम एक्स-रेज पास करते हैं थ्रू ए सैंपल तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है due to the absorption or scattering. The effect of scattering for all but the lightest element is ordinarily small and can be neglected in those wavelength regions where appreciable absorption occurs. As shown in figure 12.5, the absorption spectrum of an element, like its emission spectrum, is simple and consists of a few well-defined absorption peaks. Here again, the wavelengths of the absorption maxima are characteristic of elements and are largely independent of its chemical states, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ये फिगर है, आपको नज़र आ रहे हैं। ये जो आपको एक ब्लैक है जो कि के आपको के सीरीज़ है, यहाँ से स्टार्ट होता है फिर यहाँ आ जाता है, ये दिस इज़ द सिल्वर। और ये लेड का है जो ग्रीन जो सारी स्काई कलर है, दिस इज ऑफ द लेड एलिमेंट। तो इधर जो है एक के इधर अपीयर हुआ है और फिर इधर L1 L2 L3। फिगर 12.5 X-rays absorption spectra for lead and silver। तो आपको इधर नज़र आ रहा है कि जो ही इधर आप देख सकते हैं कि इंक्रीज़ हो रहा है वेवलेंथ। तो एक ये जो इंटेंसिटी है या मास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है वो के का इंक्रीज़ हो रहा है, फिर एब्रप्ट डिक्रीज़ या डिसकनेक्टिविटी आ जाती है, फिर उसके बाद इंक्रीज़ होना शुरू कर लेते हैं, फिर इसके बाद एब्रप्ट नीचे आ जाता है, फिर उसके बाद ऊपर चला जाता है, फिर उसके बाद तो इसको एब्जॉर्प्शन एज का नाम देते हैं। A peculiarity of X-rays absorption spectra is the appearance of sharp disconnectivities called absorption edge at wavelengths immediately beyond absorption maxima। आपको इधर जो है इसको एब्जॉर्प्शन एज का नाम देते हैं कि इंक्रीज़ होने पर एब्रप्ट डिक्रीज़ हो जाता है, तो इसको एब्जॉर्प्शन एज का नाम दिया जाता है, जो कि बाकी रेडिएशन स्पेक्ट्रा में इस तरह नहीं होता। Absorption of an X-rays quantum causes ejection of one of the innermost electrons from an atom, which results in the production of an excited ion. In this process, the entire energy, each mu of the radiation, is partitioned between the kinetics energy of the electrons, that is photoelectron, and the potential energy of the excited ions. The highest probability for absorption occurs when the energy of the quantum is exactly equal to the energy required to remove the electron just
to the periphery of the outer limits or edge of an area or object of the atom, that is as the kinetic energy of the ejected electron approach zero. The absorption spectrum for lead shown in figure 12.5 exhibit 4 peaks. The first occur at 0.14 एंगस्ट्रॉम आपको इधर नज़र आ रहा है, ये फर्स्ट, द सेकंड, थर्ड, द फोर्थ एंड फिफ्थ. The energy of the quantum corresponding to this wavelength exactly matches the energy required to just eject the highest energy k electron of the element. At wavelength just longer than this wavelength, the energy of the radiation is insufficient to bring about a removal of a k electron, and an abrupt decrease in the absorption occurs. कि ये जो डिक्रीज इन एब्जॉर्प्शन इधर हुई है, जिसको हम एब्जॉर्प्शन एज का नाम देते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है इधर. चूँकि वो एनर्जी that is insufficient to eject the electron from the K shell, इसलिए वो काम हो जाती है. At wavelength just longer than this wavelength, the energy of the radiation is insufficient to bring about removal of a K electron, and abrupt decrease in the absorption occurs. At wavelength shorter than 0.14 angstrom, the probability of interaction between the electron and the radiation gradually diminishes. This results in a small decrease in absorption. वही बात उन्होंने दोबारा की है. In this region, the kinetic energy of the ejected photoelectron increases continuously with decrease in wavelength. The additional peaks at longer wavelength correspond to the removal of an electron from the L energy level of the lead. के कुछ एडिशनल पीक भी जो है वो नज़र आते हैं लॉन्गर वेवलेंथ पे. 3 set of L level differing slightly in energy exist. 3 maxima are therefore observed. जिस तरह आपको 3 maxima इधर observe हो रहा है, 1, 2 and ये 3. Another set of lines arising from ejection of m electrons are located at the longer wavelength, which are not shown in figure 12.5. वो उसमें नज़र नहीं आ रही, वो m शेल के है या उसको m सीरीज़ का नाम देते हैं. Figure 12.5 also shows the K absorption edge for silver, which occurs at 0.485 angstrom. The longer wavelength for silver reflects its lower atomic number than that of the lead. The mass absorption coefficient. Beer's law applies to absorption of X-rays radiation. So we may write ये natural log P naught over P is equal to mu x, where x is the sample thickness in centimeters, and P and P naught are the power of the transmitted and incident
बीम रेस्पेक्टिवली। ऑलरेडी आप लोगों ने बियर-लिम्बर्ड लॉ पढ़ा है। The constant mu is also is called the linear absorption coefficient and is characteristic of the element as well as the number of its atoms in the path of the beam. A more convenient form of the Beer's law is natural log P naught over P is equal to mu m. This is used for the I think for the density where this I don't know the pronunciation of this is the density of the sample, and mu m is the mass absorption coefficient, a quantity that is independent of the physical and chemical state of the element. Thus, the mass absorption coefficient for bromine has the same value in gaseous hydrogen bromide as in solid sodium bromate. Note that the mass absorption coefficient carries unit of centimeter square per gram. तो ये आज का लेक्चर था. If you have any question you can share with me. Thanks a lot.